Hello everyone. Today we are going to talk about how you can file a suit if your trademark is infringed by a third party without your consent. So if you ask that who can file such a suit, so let's take a scenario. आप एक बिजनेस कर रहे हैं और आपने अपना जो ट्रेडमार्क है वो रजिस्टर करा दिया अकॉर्डिंग टू द ट्रेडमार्क्स एक्ट एंड द रूल्स. अब कोई थर्ड पार्टी आती है और वो सिमिलर या आइडेंटिकल ट्रेडमार्क अपने बिजनेस के लिए यूज करने लगती है. दैट बिजनेस कुड बी सिमिलर और आइडेंटिकल टू योर ओन एंड दे आर नाउ पासिंग ऑफ देयर प्रोडक्ट्स एज योर ओन. So now since you have a registered trademark, you have some rights and remedies under that. तो आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं फॉर अवेलिंग दोज राइट्स. यहाँ पे फर्स्ट स्टेप आपका होगा कि आप उस दूसरी पार्टी को विच इज़ इन्फ्रिंजिंग योर राइट्स, आप उन्हें एक सीज एंड डिजिस्ट नोटिस भेजें. ये जो सीज एंड डिजिस्ट नोटिस है, दिस इज़ बेसिकली अ रिटन रिक्वेस्ट एंड अ वार्निंग कि जो पार्टी आपका राइट इन्फ्रिंज कर रही है दे शुड स्टॉप डूइंग दैट एंड यूजिंग योर ट्रेडमार्क. और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो आप उनके अगेंस्ट एक सूट फाइल कर देंगे एंड वुड टेक एक्शन अगेंस्ट देम. अब हम एक ड्राफ्ट देखेंगे of how this kind of cease and desist notice is sent. So this kind of notice is usually sent through a lawyer or attorney. यहाँ पे आप पार्टीज के नाम मेंशन करेंगे जिससे आप नोटिस भेज रहे हैं. यहाँ सब्जेक्ट आ जाएगा सीज एंड डिजिस्ट नोटिस इशूड ऑन बिहाफ ऑफ डैश ट्रेडिंग एस, यहाँ ट्रेड नेम आ जाएगा. ऑन बिहाफ ऑफ एंड अपॉन इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम आवर क्लाइंट trading as, again the trade name, the address, we issue the following notice to you. तो पहले पॉइंट में हम अपने क्लाइंट के बिजनेस के बारे में बताएंगे. A client is engaged in the business of wholesalers, distributors and sellers of all kinds of stainless steel utensils. जो भी बिजनेस है आप उसकी डिटेल्स में मेंशन कर देंगे और वो कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं उस बिजनेस में, ऑल दैट, एंड अंडर व्हाट नेम. Our client has been rendering services under the trading style, making it one of the most recognizable marks in the field of sale of stainless steel utensils, pots and pans, and trade among the consumers. And in the second para, it says our client has been commercially using the trademarks from the year 1980 and have been marketing and selling all types of stainless steels all over India at stores, and as such a client store have come to be distinctively and exclusively associated with the clients alone and no one else. तो आप इस सेकेंड पैरा में बता रहे हैं कि आप कितने टाइम से यूज़ कर रहे हैं और इस वजह से यू हैव गेन एक्सक्लूसिविटी एंड डिस्टिंक्टिव करेक्टर. तो आपके ट्रेड नेम से ही जो आपके कस्टमर्स हैं वो आपको रिकॉग्नाइज करते हैं. तो क्योंकि आप इतने लंबे टाइम से ये ट्रेडमार्क यूज़ कर रहे हैं तो इस वजह से अब जो आपके कस्टमर्स हैं दे एसोसिएट एक्सक्लूसिवली टू यू बाय योर ट्रेड नेम. ये आपने थर्ड पैरा में भी इसको एम्फसाइज कर दिया है. Our client is vigilant in protecting their trademark and hence they have applied for and obtained registration of their trademark. अब फोर्थ पैरा में आप बता रहे हैं that you have already applied for the registration. आप उसकी डिटेल्स दे रहे हैं कि आपने किस क्लास में अप्लाई किया था. So the trademark is registered under number and in class 21. Then in next para, आप बता रहे हैं that a client's registration of their trademark provides them with certain proprietary rights. क्योंकि आपके पास registration है, so you have certain proprietary rights. They are entitled to restrict the use of the trade name if found to be strikingly similar and in association with confusingly similar trading style by others. तो वो बता रहे हैं कि यहाँ पे इनके पास कौन से राइट्स हैं क्योंकि इनका जो ट्रेड नेम है दैट इज रजिस्टर्ड. अब कोई और थर्ड पार्टी ऐसा सिमिलर या आइडेंटिकल ट्रेड नेम सिमिलर या आइडेंटिकल बिजनेस के लिए यूज करेंगी तो इट वुड हार्म देयर बिजनेस. Then in para 6 we are again telling that how our mark represents the goodwill of our business. Para 7 we say a client has therefore acquired both the statutory and common law rights due to its long
extensive and continuous use of the name. Our client is therefore the proprietor of the said trademark and is entitled to exclusive right over the name. यहाँ पे we are saying that we have both the statutory and the common law rights. Statutory right we have because हमने अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करा रखा है और उसकी वजह से अगर कोई हमारा ट्रेडमार्क इन्फ्रिंज करेगा देन अंडर सेक्शन 29 वी हैव द राइट. और कॉमन लॉ राइट्स वी हैव फॉर पासिंग ऑफ रेमेडी कि अगर कोई और इंसान हमारे ट्रेडमार्क को यूज़ करके अपने गुड्स को पास ऑफ करता है एज आर ओन तो वी कैन file a suit against them. While so, our client has recently come to know that you have started a similar store by name Dash in respect of dealing in the same line of products. तो ट्रेडमार्क भी सेम यूज कर रहे हैं, they are also dealing in the same line of products, which is in violation of our client's statutory and common law rights for our goods services registered under class 21. अब इसके बाद यहाँ पे हमने इमेजेस दिखा रखी है जो हमारे मार्क की है एंड द मार्क दैट द इन्फ्रिंजर इज यूजिंग. तो वी आर यूजिंग द सेम नेम्स फॉर द सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस. तो यहाँ पे हमने ये इमेजेस इसलिए दिखाई हैं ताकि आप ये देख सकें कि किस तरह से दे हैव बीन यूजिंग द सिमिलर मार्क. A client further states that you have copied their registered trademark with the sole intention of riding upon the reputation earned by them and the use of identical and similar name for the identical line of services. तो हम यहाँ पे basically allege कर रहे हैं that they have been passing off their goods क्योंकि वो similar goods, similar and identical goods के लिए same name, same trade name use कर रहे हैं. Our client establishes and confirms that you do not have any endorsement, sponsorship or affiliation with your company or your goods sold by using the client's registered trademark. यहाँ पे हम क्लैरिफाई कर दे रहे हैं कि हमारा आपके साथ कोई स्पॉन्सरशिप एफिलिएशन नहीं है कि आप हमारा ट्रेड नेम यूज़ कर रहे हैं. Our clients state that your use of an identical and similar trademark for the identical trade line is sure to cause confusion and mislead the consumers into believing that your goods sold under such identical trademark emanate from our client. कि इस तरह से अगर आप सेम ट्रेड नेम के अंडर बिजनेस करेंगे तो इट वुड ऑब्वियसली कॉज कंफ्यूजन टू द कस्टमर्स. अब यहाँ पे in the last para, client is instructing कि they should cease and desist from using the identical similar trademark or any other mark to that of our client's well-established and registered trademark for any of your goods or services. Secondly, you should immediately withdraw any trademark application for registration pending with the Office of the Controller General of Patents, Designs and Trademark. अगर कोई आपने ऑलरेडी एप्लीकेशन फाइल कर रखी है देन दे शुड इमीडिएटली विदड्रॉ इट क्योंकि ये सेम ट्रेडमार्क ऑलरेडी रजिस्टर्ड है विद आवर क्लाइंट. Give an undertaking in writing that you will not henceforth use, state or deal with any manner whatsoever with the trademark or any other mark or mark similar to that of our client's well-established and registered trademark. यहाँ पे हम उनसे एक रिटर्न अंडरटेकिंग मांग रहे हैं कि वो इन फ्यूचर ऑल्सो वो ये सिमिलर ट्रेडमार्क यूज नहीं करेंगे. Then the last, we are saying that within 15 days from the date of receipt of this notice, failing which we would be constrained to initiate both civil and criminal action against you and seek appropriate damages, and you would be mulcted with the cost of for the same. तो अगर 15 दिन के अंदर इस नोटिस के रिसीव होने के बाद अगर इन्फ्रिंजर्स दे डू नॉट स्टॉप यूजिंग द ट्रेडमार्क तो the client will take an action which will be both civil and criminal against them and would ask for appropriate damages. अब हमारे प्रेजेंट सिनेरियो में इस नोटिस के भेजने के बाद भी पार्टी इज स्टिल यूजिंग द ट्रेडमार्क, दे आर नॉट सीजिंग एंड डिजिस्टिंग फ्रॉम इट. तो अब हम सूट फाइल करेंगे इन द कोर्ट. लेट्स सी हाउ द सूट इज फाइल्ड. This is a plaint under Order 7, Rule 1 and 2, read with Section 26 of Code of Civil Procedure.
ऑर्डर 7 रूल 1 बात करता है particulars to be contained in plaint. The plaint shall contain the following particulars: name of the court in which the suit is brought, the name, description, and place of residence of the plaintiff, same for the defendant, where the plaintiff or the defendant or a minor is a person of unsound mind, a statement to that effect, the facts constituting the cause of action and when it arose, the facts showing that the court has the jurisdiction, the relief, where the plaintiff has allowed a set-off or relinquished a portion of his claim, the amount so allowed or relinquished, and a statement of the value of the subject matter. ये सारी चीज़ें एक पेंट में होनी चाहिए. Next, it is read with section 26. Section 26 is institution of suits. So it says every suit shall be instituted by the presentation of a plaint or in such manner as may be prescribed. In every plaint, fact shall be proved by affidavit, provided that such an affidavit shall be in form and manner as prescribed under Order 6 of Rule 15A. तो इस तरह से एक plaint फाइल होती है. It should be accompanied with a affidavit. Now let's see how we have filed this plaint. So in the first para, we will give the address of the plaintiff and his details. यहाँ पे हमने वो सब बता दिया है. The plaintiff, for the purpose of service of notice, the honorable court is as given in the cause title above and also of his counsels. यहाँ पे हमने counsel का और हमारे plaintiff का address दे दिया. सिमिलरली सेकेंड पैरा में हमने डिपेंडेंट के एड्रेस की बात करी है, वो भी हम कॉस्ट टाइटल में दे चुके हैं. एंड इन थर्ड पैरा we will talk about the business of the plaintiff. It is submitted that since 1980, plaintiff has established business in sales and distribution of cookware, houseware, etc. हम यहाँ पे उसके साथ डॉक्यूमेंट अटैच कर देंगे which is for the establishment of the business. यहाँ पे हमने establishment license लगा दिया है to prove it. उसके साथ हम यहाँ पे RTI application लगा रहे हैं, VAT certificate लगा रहे हैं, just to show the genuineness of our claim that we are a established business. Then in the next para, we are telling the court that we have spent huge amounts for advertising and creating this establishment value in the market. Since 1980, plaintiff is actively publishing ads and all that. हमने उससे related भी documents यहाँ पे annex कर दिए हैं, like the certified copies of the newspaper. जब advertise किया है वो सब हमने यहाँ लगा दिया है. किस तरह से due to this advertisement we have made a reputation and created a goodwill in the market. तो इसलिए इस तरह के documents लगाना ज़रूरी होता है to support our claim. यहाँ पे हमने ITR returns भी लगाए हैं to show our business. And in the next para, he is saying that the plaintiff has established their business in 1980 and he has applied for the trademark registration. तो अब यहाँ पे आपका client जो भी है, if he has a registered trademark or even if he has applied for the trademark, तो आप उसके सारी details यहाँ पे देंगे. हमने यहाँ पे वो details दे दी हैं. उसका हमने certificate of registration, since in the present case our client had a registered trademark, तो हमने उसका certificate यहाँ पे annex कर दिया. Then the plaintiff is using its trademark establishment name for sale of products. Plaintiff enjoys good reputation in southern India. It has become exclusive mark for the plaintiff. अब यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरह से plaintiff इस trademark को use कर रहा है and it has gained a reputation in the market. Now we are telling the further facts कि किस तरह से client को पता चला that the defendant has been using the same mark for the similar kind of goods. So it says that in October 2022, defendant number 1 is carrying on similar business as that of the plaintiff in the identical trademark as of plaintiff and created franchises in Bengaluru. The unauthorized adoption and use of the impugned marks by the defendant is bound to cause confusion in the minds of the purchasers and valued customers. Defendant unauthorizedly adopted the said trademark of the plaintiff, creating confusion in the minds of the purchasers.
which amounts to infringement under Section 29 of the Trademarks Act. यहाँ पे we have a statutory remedy in the Trademarks Act. In the next para, we are telling that due to this inherent misrepresentation to the consumers, uh, it is causing damage to the goodwill and reputation of the plaintiff, amounting to passing off and violation of common law rights of the plaintiff. Next, it says it is submitted that defendant is using deceptively identical marks and defendant has filed application for registration of trademark on this date, wherein the said trademark is proposed to be used by the defendant. तो यहाँ पे जो defendant है, he has also applied for the trademark in 2017, लेकिन जो हमारा client है उसने 1980 में ही अप्लाई कर दिया था, and he was granted the trademark in, let's see, in 2010. So he did apply in 1980, but it wasn't granted to him. Para 8. It is submitted that defendant is using deceptively identical marks and defendant has filed application for registration of trademark on November 2017 under clause 35, wherein he said the trademark is to be proposed to be used by the defendant. Copy of the application is annexed क्योंकि वो public domain में थी. So here we are saying that the defendant has also applied for a trademark registration in 2017. लेकिन जो हमारा client है, the plaintiff, he has applied in 2010. He got his trademark registered in 2010, and he has been a prior user since 1980. तो यहाँ पे हमने इसके ये डॉक्यूमेंट्स भी एनेक्स कर दिए हैं क्योंकि ये जो रिकॉर्ड होता है you can easily download it from the IP India website. It's in the public domain. Just to show that we are the prior user and we have a registered trademark while the defendant has only applied way later. हमने ये भी एनेक्स कर दिया. So this prima facie show that plaintiff is the prior user and he should be protected under Section 34 of the Trademarks Act. Copy of the registration certificate of defendant issued on 2018 is enclosed. तो जो डिपेंडेंट है उसको भी रजिस्ट्रेशन मिल गया था इन 2018, बट सिंस वी आर द प्रायर यूजर एंड हमें पहले मिला था रजिस्ट्रेशन, तो आर्स शुड बी द वैलिड वन एंड इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना चाहिए. So it is submitted that action of the defendant in adopting the trademark is malified and to encash upon the goodwill and reputation of the plaintiff. Which he has earned over a period of time right from 1980 through advertisements. His name has reached entire South India. Now in further paras 10, 11, 12 till 14, we are talking about that how the defendant has been using the trademark and causing injury to the plaintiff. It says the loss of money or injury done to plaintiff by such actions and conduct of defendant can't be calculated, and therefore the indemnification in money can't be sufficient and adequate for the damage and loss sustained or to be sustained by the plaintiff. तो क्योंकि we are working in a similar business and using the same trade name, तो जो customers हैं they are getting confused. So now how can you tell कि कितना loss हुआ है, कितनी injury हुई है to the plaintiff because of the action of the defendant? वो calculate करना is very difficult. So that's what we are claiming in this paragraph. The plaintiff claiming handing over of the breaching dies, blocks, etc. for destruction cancellation. The plaintiff says that the defendant can't vend its products or advertise it in market under the trademark, and hence defendant should be restrained from vending its product. क्योंकि डिपेंडेंट के जो प्रोडक्ट्स है उस पर सेम ट्रेडमार्क है जो कि हमारे प्लेनेटिव का है, तो इन दैट केस प्लेनेटिव इज आस्किंग कि डिपेंडेंट को
अलाउ ना किया जाए टू सेल दोज प्रोडक्ट्स विद द सेम ट्रेड नेम. That being frustrated out of the illegal acts of the defendant, plaintiff caused notice to defendant on the state, to defendant one and their franchisee outlet. And another notice was sent. अब इस पैरा में हम बता रहे हैं कि जैसे ही हमें पता चला कि डिपेंडेंट इज यूजिंग द सेम ट्रेड नेम, हमने उनको नोटिस भेजा, तो ये यहाँ पे हम उसकी डिटेल्स दी है. एंड वी हैव ऑल्सो एनक्लोज्ड दोज डॉक्यूमेंट्स एज annexures. Then in para 17 we are talking about cause of action. तो जैसे ही हमारा राइट इन्फ्रिंज हुआ, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया. तो यहाँ पे हमने बताया कि कब कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ. Next, we are saying that the plaintiff's statutory cause of action emerged in Bengaluru, where the defendant vended his product. Cause of action कहाँ arise हुआ, that वो भी हम इस पैरा में बता रहे हैं. Then we are talking about jurisdiction. तो क्योंकि डिपेंडेंट का ब्रांच ऑफिस इज इन बेंगलुरु एंड ही इज कैरिंग आउट बिजनेस विद इन द लोकल लिमिट्स एंड jurisdiction of this honorable court, hence this court have jurisdiction in allowing, trying and deciding the suit. So since defendant is doing his business in the territorial limits of this court, तो इसलिए वहाँ पे jurisdiction है. There is no pendency of any legal proceeding and litigation in the past to present for the relief claim. These are the standard paragraphs that should be there. Cause of action, jurisdiction. Now prayer. Plaintiff pray क्या कर रहा है कोर्ट से. तो पहला relief that the plaintiff wants is permanent injunction, restraining the defendant by themselves and their agents, representative, everyone, franchisee, and all those acting on their behalf or claiming under him or otherwise from using the trademark. They want a permanent injunction कि डिफेंडेंट की ट्रेडमार्क यूज ना कर सके, और एनी डिसेप्टिव वेरिएशन. ऐसा नहीं है कि अभी जो नाम है उस पर थोड़ा सा आप चेंज करके फॉन्ट वगैरह चेंज करके दोबारा से आप वही नेम यूज कर रहे हैं इन रिलेशन टू एनी अदर बिजनेसेस. सिर्फ इस बिजनेस के लिए नहीं, किसी और बिजनेस के लिए भी ना यूज करें. इन एनी मैनर और ऑनलाइन सेल्स, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, ई कॉमर्स, किसी भी वे में दे शुड नॉट बी एबल टू यूज दिस ट्रेडमार्क एंड इन passing of their goods as that of the plaintiff. Then secondly, they want investigation into damages sustained by the plaintiff owing to erroneous action of the defendants and a decree against the defendant for the amount found due on such investigation. तो क्योंकि हमने ऊपर देखा कि दे आर नॉट एबल टू कैलकुलेट द इंजरी और द डैमेज कॉज टू देम, तो दे वांट कि एक इन्वेस्टिगेशन हो कि कितना डैमेजेस सफ़र किया है प्लेनेटिव ने, एंड व्हेन दैट अमाउंट इज एसर्टेन, तो उस अमाउंट की डिक्री पास हो अगेंस्ट द डिफेंडेंट. Then direct the defendant to produce books of accounts from 2017 to till date or till the defendant desists from using the trademark. Books of accounts से पता चलेगा that how much business they have done, so it will be easy for the investigation. इसलिए they are asking them to produce it. Pass any appropriate orders. So this was the plaint. इसके बाद प्लेन के साथ एक वेरीफाइंग एफिडेविट जाती है. सो दिस इज दैट. अब इसके बाद एक एप्लीकेशन होती है अंडर ऑर्डर 6 रूल 14A ऑफ द CPC. इट बेसिकली टॉक्स अबाउट द एड्रेस फॉर द सर्विस. तो ये वो एप्लीकेशन है. देन देर इज द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स. हमने जो ऊपर डॉक्यूमेंट्स एनेक्स किए थे उसकी लिस्ट है. These are the supporting documents. इसके आगे annexures हम लगा देते हैं with the plaint to support our case. So this was the draft of the plaint that is filed if somebody infringes your trademark.